So therefore, all the Indian seafarers in the region are safe. And at control room, we have handled total 7,403 calls and more than 15,600 emails. And in past 24 hours, we received 161 calls and 320 emails. Ministry through Director General of Shipping has facilitated safe repatriation of more than 2,680 Indian seafarers so far, including 65 in last 24 hours. And the operations at all the ports across India are safe, are normal, and no congestion is reported. Thank you. Thank you, Mukesh ji. Asim ji. Good afternoon. Ministry of External Affairs continues to closely monitor the developments in the Gulf and West Asia region. Ensuring the safety, security and welfare of the large Indian community in the region is our highest priority. The dedicated special control room in the ministry is operational to respond to queries from Indian nationals and their families. We are in constant touch with the state governments and union territories to share the latest advisories and to align our efforts. Our embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance. They are proactively assisting our citizens. They are also in close touch with the local governments. Updated advisories are being issued, including information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services, and the various welfare measures being undertaken for the community. Our missions are actively engaged with the resident Indian community. They are regularly interacting with the Indian community associations, organizations, professional groups, and Indian companies to address their concerns. Welfare of Indian seafarers in the region is of high priority for us. Our missions are extending all assistance to them, including coordination with local authorities and agencies, extending consular assistance, and assisting for requests to return to India. The overall flight situation continues to improve, with additional flights operating from the region to various destinations in India. Since February 28th, around 12,000 passengers have travelled from the region to India. Airlines continue to operate limited commercial flights based on operational and safety considerations between UAE and India. Today, around 110 flights are expected to operate from the UAE to India. Flights are operating from airports in Saudi Arabia and Oman to different destinations in India. Qatar airspace is partially open. Qatar Airways is operating flights to various destinations in India. Kuwait airspace is closed. Jazeera Airways and Kuwait Airways continue to operate non-scheduled commercial flights from Dammam Airport of Saudi Arabia to various destinations in India. Bahrain airspace is open. Gulf Air is operating flights from Bahrain to various destinations in India. Iraq airspace is open and limited flight operations to destinations in the region which can be used for onward travel to India. Iran airspace is partially open for cargo and chartered flights. Our embassy in Tehran continues to facilitate movement of Indian nationals through Armenia and Azerbaijan for onward travel to India. So far, 2,428 Indian nationals have moved out of Iran into Armenia and Azerbaijan. This includes 1,096 Indian students and 657 Indian fishermen. Israel airspace is open and limited flight operations have resumed to destinations in the region which can be used for onward travel to India. Thank you. Thank you, Asim ji. Now we'll take questions. First row, 54, 130, 47, 51. 234 and 11 also, 4 also. We start with the first row. Yeah, thank you. Amar Zadi from PTI. A couple of questions. One to Sujata ma'am. There have been reports based on a brokerage report saying that fuel prices, petrol diesel prices will be increased after elections. The ministry has put out a tweet saying nothing so far. But are you categorically saying that there will be no increase or revision in prices after elections? One question to Mukesh sir as well. Sir, the Iranians have taken over a couple of ships in the Persian Gulf. Are there any Indians on those ships as well? Are we concerned about them as well? Thank you. Sukal from the Indian Express. First question to Sujata ma'am. Again, with regard to the statement or the tweet issued by the ministry in the morning today about no
proposal for fuel price hike being under the government's consideration. Just wanted to understand for how long can this continue? For how long can the OMCs continue to absorb these losses, considering we don't really seem to have an end in sight to the Strait of Hormuz crisis? The other question is to Mukesh sir. Sir, you mentioned that there were 21 Indian seafarers on one of the ships and one Indian seafarer on another one. There was a third ship also. Were there no Indian seafarers on that one? The other question again, as a supplementary to what Amar sir asked, so what is the status of the Indian seafarers on these ships currently? Because these ships, we are told, were now under the custody of the Iranians. So are the seafarers also under the care or custody of the Iranians? And again, if Asim sir would like to add to it, if that is the case, then are we in touch with Iran regarding their welfare? Thank you. Yeah, third row. My question was Sujata ma'am. Ma'am, what's the status of the LPG imports? Where are we getting the imports from, and how much have we tied up for next month? नमस्ते मैडम, मैं अभिषेक सिंगल आसन पत्रिका से। सुजाता जी से मेरा प्रश्न है मैम, जो फायर इंसिडेंट हुआ उसको काफ़ी समय हो गया, अब तक तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट की क्या स्थिति है और क्या उसके नुकसान के आकलन के बारे में मंत्रालय कुछ बता पाएगा, और कब तक वो वापस रिफाइनरी अपने ट्रैक पर आ पाएगी? This is Atul Mathur from the Times of India. My question is to the Petroleum Ministry. Ma'am, two questions. One, you have told us that there are about 41,000 people who have surrendered their LPG connections so far. Has government made any assessment of how many of them, how many people have actually have both the connections, and is the government satisfied with the kind of connections that have been surrendered so far? And secondly, can you share some updated figures on under recoveries being made by the oil marketing companies? There are some assessments that this could be about 2,400 crore per day. But what is government's assessment on that? Thank you. Yeah. जब से ये ईरान युद्ध शुरू हुआ है तो कितने क्रूज भारत अभी आए हैं? 2 से ज़्यादा आए हैं या कुछ कितने आए हैं ये क्लियर कर दीजिए। और ये 12 लाख भारतीयों को लाने के जो दावे किए जा रहे हैं, इसमें से कितने वापस फिर अपने अपने डेस्टिनेशन पे गए हैं, कोई आंकड़ा है? We take the answers. Sujata, we begin. देखिए, मैं फ्यूल प्राइसिंग के बारे में जब मैं अपनी ब्रीफिंग दे रही थी तो मैंने बहुत स्पष्टता से आपको बताया कि हमारा जो इंटरनेशनल क्रूड का प्राइस है या एलपीजी का प्राइस है उसमें बहुत वॉलेटिलिटी है, और उसके बावजूद भी भारत सरकार ने कोई प्राइस इंक्रीज नहीं किया है। अगर आप क्रूड की बात देखें तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो $70 में पिछले साल हमको क्रूड बास्केट मिल रहा था, वो इस महीने उसका एवरेज बढ़कर $113 पर बैरल से ज़्यादा हो चुका है। अगर मैं लॉन्ग टर्म की भी बात करूं तो इंडियन बास्केट अगर आप नवंबर 2021 से मार्च 2026 के बीच में देखें तो there is a huge increase, and in spite of that government has not increased the price, and the effort of the government has been to keep the price stable. और इसी के चलते इस वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की, ताकि ये जो भार है वो जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उन पर ट्रांसफ़र ना हो। ये एक गौर देने वाली बात है। इसके साथ ही भारत सरकार ने SAED इंक्रीज़ किया, और इसका जो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और इसका स्पेशल एक्सपोर्ट ड्यूटी, एंड इसका भी जो पर्पस था वो ये था कि हमारे जो भी रिफाइनर्स हैं वो मोटिवेट हों डोमेस्टिक मार्केट में ही प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। LPG का अगर आप देखें तो सऊदी CP में जुलाई 2023 से अब अप्रैल 2026 तक लगभग 102% की वृद्धि हुई है, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक प्राइस देखें सिलेंडर का तो उसमें 17% का डिक्रीज़ है। अगर यही फिगर आप
PMUY के लिए देखें तो जो डिक्रीज है, प्राइस रिडक्शन है, वो लगभग 32% है. सो आई थिंक द डाटा इज स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ एंड द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो इज विजिबल. दूसरा, LPG इंपोर्ट के बारे में आपने कहा, जैसा कि हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि हमारा इंपोर्ट अफेक्ट हुआ है. इसी के चलते बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं. उन स्टेप्स में डोमेस्टिक प्रोडक्शन का इंक्रीज भी है. तो जो हमारा 60-40 का डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इंपोर्ट था, नाउ दैट फिगर इज हॉवरिंग अराउंड 60% ऑफ आवर डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड 40% ऑफ आवर इंपोर्ट. नाउ इसके बाद भी आप सब जानते हैं दिक्कत तो है ही. इसी के लिए जो भारत सरकार है कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं. डोमेस्टिक कंजम्पशन में भी बुकिंग के पीरियड को इंक्रीज किया है. इसके अलावा डोमेस्टिक को प्रायोरिटाइज किया है और कमर्शियल पे कट किया है. तो ये इम्पैक्ट है. बट देन टू मेंटेन दिस सिचुएशन एनफ कार्गोज हैव बीन टाइड अप एंड वी विल नॉट हैव द इशू. वी हैव सफिशिएंट अरेंजमेंट्स ऑलरेडी मेड. HRRL के बारे में the report is still awaited. The committee is on the ground and they are making the inquiry and investigation. These are very technical things. So as and when the report will come, we will definitely share with you. LPG कितने PNG connections हैं या कितने डबल हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे पास 60 लाख ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनके पास दोज हु कैन इमीडिएटली शिफ्ट टू PNG, बट दे मैनी ऑफ देम आर ऑन LPG. सो इसी के चलते भारत सरकार का ये एफर्ट है और इसीलिए ये पोर्टल भी लॉन्च किया गया है और गवर्नमेंट ने ऑर्डर भी इशू किया है. और अभी अगर मैं आपको करेक्ट बता पाऊँ, आई मीन माई थिंग द डाटा आई रिमेंबर इज more than 3,75,000 people have already surrendered their LPG connections and they have shifted from LPG to PNG. इसके अलावा आपका अंडर रिकवरी के बारे में है. सो अंडर रिकवरी के बारे में द डाटा हैज़ बीन शेयर्ड विद यू. अभी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर हैविंग एन अंडर रिकवरी which varies on day-to-day basis and maybe around 20 rupees on petrol and around 100 rupees on diesel. Thank you. I have answered that question and I have said that I am giving you the perspective, I mean from 21 to now, how the government has managed the stability in terms of the prices and we will do that. Thank you. Thank you, Sujata. Shipping Ministry. Thank you. एक सवाल पूछा गया था कि एक तीसरा शिप भी फायरिंग उस पे हुआ था, तो उसमें कोई भी इंडियन सीफेरर नहीं है, तो दैट इज़ वन. फिर एक सवाल था आपका था कि कोई भी इंडियन शिप के ऊपर फायरिंग हुआ. दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन? हाँ, वो मैंने बताया था कि मतलब उसमें जो है, उसमें एक शिप था, उसमें जो है एक शिप है, उसमें एक इंडियन नेशनल है, ओनली एक शिप पे. नहीं, इंडियन नेशनल होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें सीफेरर टोटल कितने. देखो, ये इंफॉर्मेशन कितने सीफेरर वगैरह हैं, ये किसी फॉरेन फ्लैग्ड वेसल के लिए हमको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए. लेकिन इंडियन सीफेरर है तो उसका मैं बता रहा हूँ, उस पर एक इंडियन सीफेरर है. नेचुरल है कि किसी भी शिप पे एक सीफेरर नहीं होता, बट एक जो इंडियन सीफेरर है ही सेफ. अगेन मैं बता रहा था कि क्योंकि ये वेसल्स जो हैं फॉरेन फ्लैग्ड वेसल्स हैं, तो ये उनके लिए बड़ा सेंसिटिव हो सकता है ये इंफॉर्मेशन, ठीक है ना. तो फॉरेन फ्लैग्ड वेसल्स है एंड फॉरेन ओन्ड है आल्सो. सपोज कोई वेसल हो जो इवन फॉरेन फ्लैग्ड हो बट ओन्ड बाय अस, देन आल्सो यू नो वी कैन इंटरेक्ट. बट बिकॉज दैट वेसल इज फॉरेन फ्लैग्ड, फॉरेन ओन्ड,
So, yes, we have one Indian seafarer. We have spoken with the concerned authorities, and he is safe. And जो तीसरा वेसल था उस पे कोई भी इंडियन सीफेयर नहीं है. Then एक और सवाल, हाँ. नहीं, वो भी मतलब वो सेफली है बाहर. हाँ, क्या? Okay, I'll tell once again. There is one ship that is Epami Known Das, है ना, which is foreign flagged vessel and again owned by a foreign company. On this vessel, one Indian seafarer is there and he is safe. He is on the western side of the Persian Gulf. That is number one. Then there was another vessel, Francisca, that on this particular vessel, again, this vessel is on the western side of the Persian Gulf and no Indian seafarer. And there is another vessel, third vessel, Euphoria. On this vessel, 21 Indian seafarers are there, and this vessel is eastern side of the Persian Gulf. Now you can make it out which vessel is where. So that you can make out of that. And there was another question that जब से ईरान युद्ध हुआ है कितने शिप आए, दिस इज व्हाट यू वांटेड टू आस्क. हाँ, तो जब से ईरान का युद्ध शुरू हुआ है तब से 10 वेसल आए हैं. उन 10 वेसल में इंडियन फ्लैग्ड वेसल मैं बता रहा हूँ, उसमें 9 वेसल एलपीजी के हैं और 1 वेसल क्रूड का है. Thank you. Asim ji. I have nothing to add to what Shipping Ministry has said, but what I can definitely mention is that we continue to be in touch with Iranian authorities for safe exit of our ships through the Strait of Hormuz, and I think we have reiterated it earlier also, and on earlier occasions also mentioned this. देखिए, इसमें जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल बताना वो नहीं होगा क्योंकि ये फॉरेन फ्लैग्ड वेसल है. बट बिलीव अस दैट बीइंग इंडियन सीफेयर we have responsibility to ensure that they are safe, and one Indian seafarer is there and we are taking care of him, but we should compliment the effort of the foreign company, foreign owner, so that is the point here. I am trying to stress that he is safe, and not only he is safe, but in fact all the seafarers are safe. Thank you. Thank you, friends. Thank you, officers. Thank you all.